नो मैटर ऑन वट वॉक ऑफ लाइफ यू आर, आप कौन सी जर्नी पे हो, कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कौन से चेंजेस लाना चाहते हो, कितने ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, इफ़ यू कैन ओनली इंटीग्रेट दीज टूल्स इन योर लाइफ, you will see the magic they do for you in completely transforming your life for the better. Hey there, welcome to the channel. My name is Jasleen और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 very powerful tools जो अगर आप अपनी लाइफ के हर टेक्निक में, हर चेंज में, हर शिफ्ट में, अपनी लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही इंक्लूड करना शुरू करेंगे, अपने बिहेवियर्स में इंक्लूड करना शुरू करेंगे, no matter what kind of change you want to make, no matter what obstacle you are facing, and no matter where you are willing to go, you will get to your desired destination with so much ease, with so much joy, and with so much guidance and insight that you will be wondering कि how is it actually possible. Now ये tools affirmation technique या visualization technique नहीं है. The thing is, ये सारी techniques ना बहुत अच्छी हैं, but the tools that I am going to share today are the foundation of every single technique. But यही tools हमारे हर technique में, हमारी life में ही बैक सीट पे चले जाते हैं, and that is why I feel there is so much suffering. So if you can, please start integrating these in day-to-day life, in your day-to-day life, in your day-to-day behavior with yourself, with others, and you will seriously see the magic they do for you. I am not even kidding. It is not a clickbait or a cliche line. बहुत simple लगेंगे सुनने में. I will be explaining the perspective and how actually they help you, everything, and the only thing you have to do is test it for yourself. Don't believe my words. Test it for yourself and you will realize the difference you feel within yourself then and there. और जब आप उसको commitment के साथ practice करोगे ना, you will start changing your life without any kind of unnecessary burden on yourself. So let's begin with this video. And I am sure by the end of this video, you will find a really magical secret to change your life for the better. So let's begin now. The very first tool is love. Now, before you think, what is she talking about? How is love a tool? The courage that you need to go towards your dreams or to change your life can only come from the true and authentic love you have for yourself. Read the statement once again, pause the video and read it, and you will realize what I am trying to say. अब होता ये है कि we have so many goals, we are willing to do so many things, and क्योंकि thankfully or not, the conditioning जिसके साथ हम बड़े होते हैं is filled with so much of criticism and judgment जो हमारा खुद की तरफ डेवलप हो जाता है because of the circumstances जो हमारे आसपास होते हैं. कई बार आपके आसपास का environment criticism से भरा होता है. कई बार you face the people you are very close to are very critical of you or of themselves. अच्छाइयाँ होते हुए भी हमारा हाईलाइटेड फोकस होता है तो वो सिर्फ जो खामियां हैं और जो सिर्फ हमारी बुराइयां हैं उन पर. नो मैटर हाउ मेनी गुड थिंग्स यू माइट हैव डन इन योर डे, if you do only one bad thing, only one little mistake, that will be the focus, the highlight, the spotlight of your day, and you will criticize yourself or maybe get into guilt or sabotage yourself in some way or the other. Now, if you have to change this thing about yourself or bring any kind of change, you have to start loving who you are and where you are right now. Because yes, you have to be forward looking. Yes, you have to achieve your goals and dreams. But if you cannot do that with the love that you deserve to or that your dream deserves, you are not going to get anywhere. और उससे होगा ये that you might be facing in your life right now is you would have challenges and you would feel कि I want to give it up. You would face criticism और आपके पास strength नहीं होगी उसे handle करने की. You would face judgment and you would feel that there is something wrong with you. इन सारी चीज़ों का एक ही solution है, that is the love you have for yourself, for your dreams, and that is true and authentic. वो arrogance और egoism वाला love नहीं, the true authentic love. It serves as the very strong wall, very strong ground for you
जिसपे आप अपनी लाइफ की ड्रीम्स की बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। सुनने में बहुत फिलोसफिकल और अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ। जो घूम जाता है, वी ट्राई अफर्मिंग बट अ पार्ट ऑफ अस फील्स हाउ आर यू सेइंग दिस, इट्स अ लाई। वी ट्राई विजुअलाइजिंग बट इट डज नॉट कम दैट इजीली फॉर सो मेनी ऑफ अस, और यू नो वी फील लाइक अ बर्डन, अ रूल जिसे हम फॉलो नहीं करेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, करने के बाद भी कई बार रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। It's only one thing that is lacking there, and that is the love you should have for yourself and the love you need to have for that dream in your techniques. If you can bring that love, that feeling of blessedness, the feeling of worthiness, you will see कि बिना उन techniques के भी life is working so very well for you, and you will make any change that you are wishing to with so much ease. आगे और भी 2 tools है जो इसके extensions ही हैं, that is also going to help you a lot, but you can start just by feeling that gratitude for the person you are and for how far you have come, because it was not an easy journey for any of us, right? We all face challenges, we all fail, we all fall, but we stand up जहाँ पे भी हैं, जिस भी condition में हम हैं, we have done our best. And I believe if we can acknowledge that, that is the form of love you need to practice. If you are thinking how do I love myself, start appreciating yourself अपनी छोटी छोटी traits के लिए. If you can cook well, appreciate yourself, give yourself that credit. Tap yourself on the shoulder every single time you do a good thing, and you will realize so many beautiful traits you have, and you are just focusing on some imperfections which you can really work on, but they don't need to be सिर्फ आपका वही फोकस। तो इफ यू वांट, स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल टूल टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, दैट इज अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ फॉर लिटिल थिंग्स दैट यू डू एंड अप्रिशिएटिंग योर लाइफ फॉर व्हाट इट हैज ब्रॉट यू। The second powerful tool is compassion and understanding. Now, I strongly believe that all of us are very beautiful souls inside, and the reason why we are struggling, suffering, or being negative or any such thing is because we have been through things that made us that way. कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से कुछ beliefs develop हो गए which are running our life, which are trying to protect us, and we get trapped into those beliefs, और हम उन्हीं reactions को automatically follow करते जाते हैं, उन्हें change करने की कोशिश करते भी हैं तो नहीं हो पाते। So if you want to change your reactions, change your behaviors, a very powerful tool जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, and it is very saddening, is having compassion and understanding for your own behaviors and your own so-called negative thoughts. Now, why? As I said, they are there for a reason. वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, विच इज अनदर थिंग, बट एट देयर हार्ट योर fear has the intention to keep you safe. Your anxiety wants you to take action so that you are safe. Your worry needs a solution, peace, trust, flow. हमारे हर नेगेटिव थॉट का एक ऑपोजिट पॉजिटिव इमोशन होता है जो वो नेगेटिव थॉट क्रेव करता है, जिसे हम समझ नहीं पाते, और हम उस नेगेटिव थॉट को ब्लेम करते हैं, खुद को जज करते हैं, एंड इट ओनली क्रिएट्स मोर ऑफ दैट सेम थिंग, एंड वी गेट मोर जजमेंटल, मोर गिल्टी, मोर बर्डनसम. सो इफ यू आर डूइंग this with yourself, सबसे पहले please recognize you are not a wrong person if you are having those thoughts, for having those behaviors, and secondly they are there to protect you in their own way. उन्हें भी नहीं पता है that there is a better way, they are just doing their best. ये सुनने में बहुत unconventional लगता है क्योंकि अब तक we have just learned to push our fears away, but honestly if you can just practice it for once, just view your fear with compassion, that it is there to protect you, not to harm you, and you sit with it ki what are you trying to protect me from, or what do you need from me. The answer that you will get will be a very big guide आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, to get you to the freedom that you are seeking, to the life of your dreams that you are seeking. हमें अक्सर सिखाया जाता है कि अपने नेगेटिव इमोशंस को या तो सप्रेस कर दो या तो पुश अवे करो किसी भी तरीके से, बट thankfully आज के पैराडाइम में through IFS, through so many things are coming up जहाँ पे people are able to process their emotions and understand कि उन emotions का कोई reason है. And once you understand this, what
once you understand this, what is it actually trying to tell you, what it is actually trying to protect you from, you get a key to your freedom. Those so-called negative bad emotions become your freedom key to your success, to a healthy relationship, to a healthy body, to a beautiful life filled with joy. तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, डोंट गो टू फार इन इट, बिकॉज इट्स अ थिंग जहाँ पे आपको हो सकता है प्रोफेशनल हेल्प लगे, तो प्लीज़ गो हेड एंड टेक इट. एंड ऑल्सो मेरे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो. बहुत बेसिक स्टार्टिंग स्टेप्स हैं दैट कैन लीड यू टू योर ओन, टू गेट टू नो योर ओन फियर्स एंड योर ओन doubts and anxiety. Why do you face that? And again in this video also छोटी सी exercise मैं एक share करूँगी that you can practice. And the exercise is just sit down with that feeling, tune into that feeling. Where do you feel that feeling in your body? Where do you feel fear in your body? It might be in your gut, it might be on your chest, it might be in your head. Just tune into that fear and try to feel compassion towards it, try to feel love towards it, try understanding that it is there for a reason. और अगर नहीं हो पाता है, it's okay, you can try it next time, don't force. But if you can, try to feel that love and compassion, view it from a different perspective, it is there as a friend in a different way rather than an enemy, and ask it, what are you trying to tell me? What are you trying to protect me from? What is there that I need to know? What is there that I need to heal? ये सारे क्वेश्चंस जब आप पूछोगे, हो सकता है आपको इनसाइट्स ना मिले. अगर नहीं मिलते हैं, कुछ टाइम, कुछ दिन अगर आप रेगुलरली ये करोगे, यू विल गेन योर ओन ट्रस्ट एंड यू विल बी एबल टू रीच दोज इनसाइट्स. क्योंकि सुनने में अगेन ये अजीब लगेगा, बट आर फियर्स एंड आर डाउट्स, दे आर लाइक लिटिल चिल्ड्रन एंड दे नीड दैट लव एंड नर्चरिंग. सिर्फ वही चाहिए होता है उन्हें. And once they gain our trust, once they can trust you, once my fear can trust me, it can open up कि ये problem है, you are not doing this, you are not taking this action, you are not speaking up for yourself, or maybe you are not setting a boundary, or maybe you are not taking that action, any such thing. And then it just goes away. Once the message is delivered, the thing goes away. It's everything. It's for illness, it's for fear, it's for doubt, it's for everything. Once the message is delivered, it will go away. So if you can sit with it, अगर आंसर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है then it is your duty to gain your own trust. Give some time to it and धीरे धीरे आपको insights मिलेंगे and you will realize what is actually bothering you, and then you can take action on what is required. और अगर तब भी कुछ नहीं होता है, just love yourself. And again, just have compassion towards yourself, because you are not a wrong person. Again, I would say that. And that fear is also not something that you should, banish, or you should judge, or you should throw away. It's an emotion and it's okay to feel it. You are not wrong. Be loving and compassionate towards yourself. और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, just do this one simple thing. Even before starting your exercise, that exercise जो मैंने अभी share की, just set your intention. Dear God, dear universe, I'm willing to heal this. I'm willing to find my freedom. Show me the way. And I am not even kidding you. Every single step you will be guided to the right video like this, or to some other video, or to a teacher, to a mentor, to a book, to a podcast, to a friend, to a therapist, to जो भी आपके लिए सही होगा. It works every single time. Only you have to give it a try. If you want, you can just set one simple intention and you will see the steps unfolding. अगर आपका commitment genuine है ना, you will genuinely receive an answer, something. Just be aware, be open, and be willing and committed to change and transform your life for the better, and you will find your way. Third powerful tool is forgiveness. Now, I believe change एक one time event नहीं होता है. Change आने में, चेंज लाने में टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. वी हैव टू पुट इन दैट वर्क, क्योंकि स्पेशली जब बिहेवियरल चेंज होता है, जब हैबिट्स चेंज करनी होती हैं, वी नीड टाइम. वी कैन, नन ऑफ अस इज सो परफेक्ट कि एक बार में वी आर जस्ट डन, राइट? वी ऑल फॉल, वी ऑल फेल, वी ऑल लूज आवर वे, वी ऑल गेट साइड ट्रैक्ड. दैट इज द टाइम वेयर it will be decided कि आप ये चेंज ला पाओगे या नहीं. It is not just the successes. हर दिन you can tick mark on that day कि हाँ कर दिया. What will you do जब आपने मिस किया? What will you do when you failed? How will you handle it? It's a big determinant
कि आप सक्सेसफुल हो गए अपने चेंज में या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का नॉर्मल रिएक्शन होता है खुद को ब्लेम कर लेना और ये सोच लेना दैट मुझसे ही नहीं हो रहा, लोगों ने तो आराम से कर लिया, आई एम नॉट वर्दी ऑफ डूइंग इट, मैं निकम्मा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने क्यों कर दिया। बट इसकी जगह इफ यू कैन जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ एवरी सिंगल टाइम यू फेल, अंडरस्टैंड कि आप एक रोबोट नहीं हो जिसमें प्रोग्रामिंग बस भर दी गई है, यू आर अ ह्यूमन हु इज गोइंग थ्रू थिंग्स एंड यू नो कभी कुछ चीज़ें हमको ट्रिगर कर देती हैं एंड इट्स ओके एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम पुटिंग दिस एफर्ट, माई इंटेंशन इज जेन्युइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटेंशन जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है, अगर है तो ही ये सारी चीज़ें काम करेंगी। And you know, you are just doing your best, and if you can realize this and forgive yourself, you will automatically wake up on time next day. You will automatically enjoy your workout, enjoy your diet, enjoy your any change that you're trying to bring into your life. It will not be something that you have to वर्क सो हार्ड ऑन एंड यू नो इट बिकम्स अ नाइटमेयर, क्योंकि आप एक गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हो, जजमेंट ट्रैप में चले जाते हो एंड इससे बाहर निकलना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है। बल्कि इट वुड बी अ स्मूथ सेल, क्योंकि यू वुड नो आई एम नॉट गोइंग टू बीट अप ऑन माई सेल्फ नो मैटर वॉट। मेरा इंटेंशन जेन्युइन है, आई एम पुटिंग इन एफर्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू चेंज माई लाइफ। I don't know when and how, but I will not give up on this and I will not blame or judge myself for this. I forgive myself and I am again going to try the next time. You will win your trust, you will win your confidence, you will gain esteem, and you will successfully change that habit and behavior that you are so trying to do. So if you don't believe me, you can practice this on anything that you're trying to change or planning to change, habit hai, behavior hai, anything. You will see the magic then and there. Again, intention has to be genuine. आप ऐसे हवा में बोल रहे हो कुछ भी नहीं होगा. Your intention and commitment make the whole game of a different level. So these were the 3 very powerful tools जो मुझे लगता है कि हमारी हर टेक्निक का बेस होना चाहिए. Having that love for ourselves, forgiving ourselves and being very compassionate and kind towards ourselves. अगर ये हम हमारे affirmations में, हमारे visualizations में, हमारे किसी भी टेक्निक में लेके आ सकते हैं ना, that टेक्निक का पावर 100x हो जाता है when as compared to the time जब हम सिर्फ उस टेक्निक पे फोकस करते हैं और हमारा एक पार्ट होता है जो abandoned फील करता है, unworthy फील करता है and we try to push it away and try to make that affirmation or technique work. Rather जब हम उस पार्ट को लेके आते हैं अपने साथ, we as a whole come to that technique, practice it and the result is then faster and really compounded. If you don't believe me, again, you can test it for yourself. Don't believe my word. Don't take my word for it. Test it for yourself. You will see the difference and you will genuinely transform and change your life for the better, as I said in the starting of this video. So this was all I wanted to share for this video. It's not something simple, I really understand that, but ये बहुत basic चीज़ें हैं, बहुत basic tips मैंने share किए हैं and I believe अगर आप सच में अपने आप को change करना चाहते हो, you can start off with this. बहुत basic चीज़ें हैं. खुद को दिन में appreciate करना, एक list बनाना, compassionate होना, खुद को judge ना करना, forgiving yourself, it's really important. And self appreciation is the most simplest thing you can do. थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है उसको लाने में, but if you can make it a habit, if you can remind yourself, put an alarm or reminder ki this is this, I mean I am a good person and understand yourself and be very compassionate जब नहीं कर पा रहे हो तो you will automatically find your way. And the best thing, setting intention for what you are intending to do. It will all bring everything together. तो I really hope कि आप इसमें से कुछ यूज़ करोगे, जो रेजोनेट किया होगा आप उसे फॉलो करोगे, तो प्लीज़ डू इट एंड यू विल सी द रिजल्ट्स दैट दीज सिंपल टूल्स कैन ब्रिंग इन टू योर लाइफ. एंड अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऑल्सो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच ब्यूटिफुल वीडियोज़. एंड आप मेरे पिछले वीडियोज़ को चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी मिल जाएंगे और कार्ड्स भी मिल जाएंगे. फॉर स्पेशली द सेकेंड पॉइंट, हाउ कैन यू बिकम कंपैशनेट टुवर्ड्स योर नेगेटिव थॉट्स, मैंने बहुत वीडियोस किए हैं उसके ऊपर रिसेंटली में. इट विल रियली रियली हेल्प यू. यू कैन ऑल्सो सर्च गैबी बर्नस्टीन, रिचर्ड सी श्वर्ट्ज, उनके काफ़ी सारी टेक्निक्स और टूल्स आपको मिल जाएंगे दैट विल गाइड यू ऑन योर पाथ. सो आई रियली होप दैट यू फाइंड योर वे एंड यू हैव अ जेन्युइन इंटेंशन एंड यू लिव द बेस्ट लाइफ दैट यू डिजर्व एंड दैट यू डिजायर. Be very kind and gentle to yourself because it will take time and you are doing your best. Thank you so much for watching this video. I really hope you are doing good. Take very good care of yourself and remember, you deserve the world.